हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर वीडियो। आज हम इस क्लास में इस लेक्चर वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो हम पिछले दो लेक्चर में पढ़ रहे हैं हमारे एनिमल किंगडम के बारे में, द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के बेसिस से जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो इतने सारे एनिमल है जो डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइडेड हुए हैं, तो कौन कौन से बेसिस पे हम डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किए हुए हैं, उसके बारे में हम लास्ट दो लेक्चर वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा नए टॉपिक शुरू करेंगे, विल स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ। पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में उनका डिटेल्स, उसके बाद हमारा जो मलेरिया का लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम वाइवक्स का लाइफ साइकिल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एनिमल किंगडम हम डिफरेंट फाइलम्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस क्लास में मैं पिछले क्लास में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बॉडी सिमेट्री ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, जॉर्म लेयर, ये सब बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो आज इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नए थोड़ा सा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो अ, कुछ पार्ट्स बच गए हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे बॉडी प्लान के बारे में। तो बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान मीन्स डाइवर्स इन शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज एनिमल्स हैव बॉडी दैट फिट्स इनटू मेनली थ्री बेसिक बॉडी प्लान्स। हम आज बात करेंगे बॉडी प्लान के बारे में। तो according to body plan, animals are mainly divided into three categories. Animals are divided into three categories. That is like cell, aggregate, cell aggregate body plan. The next one is the blind sac body plan. The third one is the tube within tube body plan. Tube within ट्यूब बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान के हिसाब से एनिमल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। ये जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है ना, इट इज मेनली फाउंड इन फाइलम फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर आ जाते हैं सारे स्पॉन्जेस। जैसे कि एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, एक मीन्स यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर इस टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, बट the cell is loosely arranged. Cells are cells cells are loosely arranged. So tissue tissue and organs are absent here. Okay, in this type of body plan, as cells are loosely arranged, but they are multicellular. Different function occur in the multiple cells, but they lack tissue or organ. Tissue or organ they lack करते हैं. And all functions are occur inside the cells only. And this type of body plan mainly found in phylum Porifera.
Then our blind sac type of a body plan. Blind sac type of body plan mainly found in last class मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली वन ओपनिंग होता है and that opening function as both mouth and anus. एक ही opening होता है and that is known as incomplete digestive system. So in a blind sac type of body plan, it is mainly found in like in phylum Coelenterata, in phylum Coelenterata, Ctenophora, and in phylum Platyhelminthes. And ये जो सारे एनिमल्स है, ये जो प्लाटीहेल्मिन्थेस हो गया, सिलेंडरेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, इन सारे फाइलम में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नोटिस हम लोगों ने किए थे या हम लोगों ने स्टडी किए थे. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान मीन्स incomplete digestive system. So means what happened here ना मैंने जैसे बताया यहाँ पर digestive system has only one opening. Digestive system has only one opening and that opening acts like both mouth and anus. Then the third type of body plan is tube within tube body plan. What is the third type? The tube within tube body plan. Tube within tube means and this is mainly found in from phylum Aschelminthes to phylum Chordates. Means it is mainly found in phylum Aschelminthes to Chordates. And it means like blind sac blind sac body plan में मैंने क्या बताया? It is mainly we can say incomplete digestive system. So in tube within tube body plan, we can say all animals having complete digestive system, having complete complete digestive system, digestive system. तो यहाँ पर क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था ना, ओनली वन ओपनिंग होता था डाइजेस्टिव सिस्टम में और वो ओपनिंग बोथ माउथ एंड आनस की तरह फंक्शन कर रहा था. लेकिन बट इन ट्यूब विद इन body plan or here we can notice complete digestive system and we know that in complete digestive system क्या कितने ओपनिंग्स होते हैं? टू ओपनिंग्स होते हैं. टू ओपनिंग्स होते and one act as mouth and another is anus. Another is anus. So this is all about our body plan. But this tube within tube body plan will study little more about tube within tube body plan. ये जो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि दे हैव टू ओपनिंग्स and one is function as mouth and another is function as anus. Okay. तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान अचीव्ड इन टू डिफरेंट वेज. ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दो हिस्सों से हम अचीव कर दो टाइप से हम अचीव कर सकते हैं. और ये जो सारे एनिमल्स है ना, इनको दो हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है.
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जितने सारे एनिमल्स है, हम सारे एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किए हुए। एक हो गया हमारा प्रोटोस्टोम्स। एक हो गया हमारा क्या, प्रोटोस्टोम्स। और दूसरा टाइप हो गया हमारा ड्यूटेरोस्टोम्स। तो मैंने यहाँ पर बताया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, दो ओपनिंग्स होता है, एक माउथ होता है, एक क्या होता है, आनस होता है। तो प्रोटोस्टोम में क्या होता है ना, प्रोटोस्टोम में जो पहले दो ओपनिंग्स होगा, इसमें क्या होगा ना, प्रोटोस्टोम में जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब में ही माउथ और आनस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, प्रोटोस्टोम्स में पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्मेशन होगा, शुरू होगा, पहले यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर माउथ माउथ फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पहले माउथ होगा, उसके बाद आनस होगा। पहले माउथ विल डेवलप फास्ट, then anus. In protostomes, mouth will develop first and then anus. And this is mainly noticed in phylum like annelid, arthropoda, and mollusca. ये इतने सारे जो फाइलम हो गए, अनरिल्ड हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, जो एनिमल्स इन तीनों फाइलम के अंदर आएंगे, उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट होगा, वो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ विल डेवलप फर्स्ट, देन एनस विल डेवलप। बट इन ड्यूटेरोस्टोम यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा। बट हियर जो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा, यहाँ पर क्या होगा ना, ड्यूटेरोस्टोम्स में पहले आनस विल डेवलप फर्स्ट, देन माउथ। आनस विल डेवलप फर्स्ट, देन माउथ। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पहले माउथ हुआ था, उसके बाद आनस। बट यहाँ पर पहले आनस, उसके बाद माउथ। एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट सीन इन मेनली इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, and in chordates also. And we humans, if question will arise, we humans are protostomes or deuterostomes? We are deuterostomes because chordate comes under deuterostomes and we are chordates. So we are deuterostomes by default. And what develops first? Anus develops first, then the mouth. This is all about the body plan. Then we'll study about coelom or body cavity. Now we are going to study about the coelom or body cavity. सीलम और बॉडी कैविटी। ये सीलम और बॉडी कैविटी क्या होता है? सीलम क्या है ना, जो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, वी कैन नोटिस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर क्या होता है ना, हमारा एक होता है गॉट वाल, एक हो गया गॉट वाल, जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। और गॉट वाल को सराउंड होके रहता है हमारा क्या, बॉडी वाल।
गॉट वॉल को कौन सराउंड करता है? बॉडी वॉल सराउंड करता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे जर्म लेयर के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, organisms are divided into two types. Either they are diploblastic or triploblastic. In diploblastic, two germ layers are present, that is our uh, ectoderm and endoderm. But in triploblastic animals, three germ layers are present, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. ये जो सीलम क्या है ना, सीलम ये हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, पहले हमारा हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज गॉट वॉल, गॉट वॉल, and got wall is surrounded by body wall. got wall is surrounded by body wall. तो क्या होता है ना, जो डेवलप्ड एनिमल्स है, ये जो गॉट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में जो हिस्से होता है, गॉट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच का जो हिस्सा है, किस किस एनिमल में क्या होता है ना, यहाँ पर फ्लूइड फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट है, एंड दिस फ्लूइड फील्ड स्पेस इज नोन एज सीलोम और बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी। ओके, हमारा क्या हो गया, दो टाइप का वाल हो गया, एक गॉट वाल हो गया, जो हमारा गॉट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सराउंड करता है, और एक बॉडी वाल हो गया जो गॉट वाल के चारों तरफ रहता है। तो ये गॉट वाल और बॉडी वाल के जो बीच का जो हिस्सा रहता है, ये बहुत सारे एनिमल में क्या होता है ना, स्पेस, फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट रहता है, एंड दैट फ्लूइड फील्ड स्पेस और कैविटी lying between the outer body wall and inner got wall. ये जो बॉडी वॉल हो गया, ये क्या हो गया, आउटर वॉल, बॉडी वॉल इज द आउटर वॉल, आउटर वॉल, एंड गॉट वॉल इज द इनर वॉल। ये जो आउटर वॉल एंड इनर वॉल के जो बीच में जो हिस्सा रह गया, जो स्पेस रह गया, बहुत सारे एनिमल में वो स्पेस क्या होता है ना, फ्लूइड से भर जाता है, एंड दैट फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गॉट वॉल इज नोन एज सीलोम और बॉडी कैविटी. The coelom contains most visceral organs and lined by mesoderm on all sides. ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, हम अब पिक्चर देखेंगे, दिस स्पेस इज लाइंड बाय मेसोडर्म. Absence or presence of a coelom in body is very important classifying feature of animals, and on the basis they can divide as eucoelomate, pseudocoelomate and acoelomate. ये जो बॉडी वाल एंड गॉट वाल के बीच में जो सीलोम, इट इज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स. कुछ कुछ एनिमल्स में होता है और कुछ कुछ एनिमल्स में नहीं होता है. तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, according to according to according to presence or absence of coelom, animals are mainly classified into three types, that is eucoelomate, the second one is the eucoelomate, the second one is the pseudocoelomate, and the third one is the our acoelomate. Acoelomate means here true coelom present. Eucoelomate means true coelom present, and pseudocoelomate means true coelom absent,
and acoelomate means coelom is totally absent. Totally absent. Okay. According to presence of or absence of coelom, animals are divided into three types. That is eucoelomate animals, pseudocoelomate animals, and our acoelomate animals. Now we will study about the eucoelomate, pseudocoelomate, and acoelomate animals. Okay. Now eucoelomate. Eucoelomate means you means true. You means true. Coelomate means coelom present. Means what? Where in those animals, which animals contain true coelom, they are known as eucoelomate. True coelom is a body cavity. What do we mean by true coelom? True coelom is a body cavity which arises as a cavity in embryonic mesoderm. मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ पिक्चर के माध्यम से थ्रू पिक्चर आई वांट टू शो यू ये देख लो ये जो हमारा हो गया ये मैंने बताया था आप लोगों को ये बाहर का हिस्सा क्या था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड सिलोम मेनली प्रेजेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ओनली नॉट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दिस इज द पिक्चर ऑफ एनसीईआरटी ओके यहाँ पर क्या हुआ ना ये एक्टोडर्म हो गया बाहर का हिस्सा ये हमारा बीच का जो हिस्सा क्या हो गया मेजोडर्म हो गया ये जो भीतर का हिस्सा पूरा अंदर का हिस्सा है ये हो गया हमारा एंडोडर्म ये जो ये हमारा आउटर क्या हो गया ये हमारा हो गया आउटर बॉडी वॉल ये हो गया हमारा गॉट वॉल ऐसे बोल सकते हैं एक मिनट ओके हाँ ये जो है हमारा क्या हो गया आउटर इज द एक्टोडर्म आउटर इज द ectoderm and the this middle layer is known as mesoderm okay and the inner wall here is the endoderm inner wall is our endoderm ये जो हो गया क्या हो गया ये हमारा गॉट हो गया ये क्या है गॉट है गॉट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम है ये जो गॉट के अराउंड में क्या है हमारा गॉट वाल है और ये क्या हो गया बॉडी वाल हो गया तो ये जो जहां पर यूसिलोमेट हो जो एनिमल होता है ना जिन एनिमल्स के पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है एंड सिलोम मीन्स मैंने क्या बताया तो गैप बिटवीन द बॉडी वाल एंड द गॉट वाल तो ये जो सिलोम है यूसिलोमेट एनिमल में जो सिलोम है दैट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म ये कहाँ से डेवलप होता है मेजोडर्म से ही डेवलप होता है एंड यूसिलोमेट एनिमल्स आर एनालिड्स इकाइनोडर्म्स एंड कोडेट्स तो ये जो यूसिलोमेट एनिमल्स है यूसिलोमेट एनिमल्स का जो सिलोम है वो मेजोडर्म से डिराइव होता है यूसिलोमेट्स में जो सिलोम सिलोम कहाँ से डेवलप होता है मेजोडर्म से एंड ये जो यूसिलोमेट है ना ये भी दो टाइप्स के है ये कितने टाइप्स के है दो टाइप्स के है एक हो गया हमारा सिजोसिलोम सिजोसिलोम
and another type is our enterocoelom. एक हो गया हमारा सिजोसिलम और एक हो गया एंटेरोसिलम। सिजोसिलम में क्या होता है ना, द सिलम डेवलप्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म, ये सिलम, सिजोसिलम में जो सिलम डेवलप होता है, सिलम इज ड्यू टू सिलम डेवलप्ड डेवलप्ड बाय स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म मेजोडर्म। बट एंटेरोसिलम में क्या होता है ना, एंटेरोसिलम में क्या होता है ना, दिस इन दिस सिलम डेवलप्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm which arises from our gut wall, arises from our gut wall। यहाँ पर क्या होता है ना, बॉडी वॉल से जो सिजोसिलम में जो सिलम डेवलप होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म टुवर्ड्स फ्रॉम दी गॉट बॉडी वॉल। बट एंटेरोसिलम में क्या होता है ना, मेसोडर्म अराइज फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गॉट और एंटेरन as a hollow outgrowth और एंटेरोसिलोमिक पाउच। मीन्स क्या होता है ना, देख लो आप लोग, ये यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ये हो गया हमारा मेजोडर्म, ये हो गया हमारा एंडोडर्म एंड दिस इज द गॉटल एंड दिस इज द बॉडी वॉल। मैंने आप लोगों को क्या बताया ना, जब गॉटल एंड बॉडी वॉल के बीच में जब फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। जब फ्लूइड फील्ड स्पेस इज नोन एज, ये जो स्पेस है ये फ्लूइड से भरा हुआ होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। जब एंड इन यूसिलोमेट एनिमल्स, जो यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है ना, जो सिलोम है डेवलप्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म। एंड अगेन we divided eucoelomate animals in two groups, that one is schizocoelomate and another one is the enterocoelomate। schizocoelomate में क्या होता है ना, जब आप लोग यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये हो गया हमारा एक्टोडर्म, ये ब्लू वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये यहाँ पर भी है, बॉडी वॉल से भी अटैच है, ये यहाँ पर कुछ हिस्सा मेसोडर्म का गॉट वॉल से भी अटैच्ड है, कुछ हिस्सा मेसोडर्म का बॉडी वॉल से अटैच्ड है, कुछ हिस्सा मेसोडर्म का गॉट वॉल से अटैच्ड है। जब क्या होता है ना, सिजोसिलम में क्या होता है ना, ये जो सिलम डेवलप्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, यहाँ पर भी सिजोसिलम में भी मेसोडर्म से डेवलप होता है, एंटेरोसिलम से भी मेसोडर्म से डेवलप होता है सिलम। लेकिन एंटेरोसिलम में क्या होता है ना, जो सिलम, जो स्पेस, जो पाउच डेवलप होता है, वो जो मेसोडर्म से डेवलप होता है, वही मेसोडर्म किससे अटैच होता है, गॉड से अटैच होता है। जो मेसोडर्म गॉड से अटैच होता है, वही मेसोडर्म से ही सिलम क्रिएट होता है। एज एंड जब जो मेसोडर्म गॉट वॉल से अटैच है एंड वो सिलम फॉर्मेशन करता है, उस टाइप के सिलम को हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरोसिलम बोलते हैं। And enterocoelom is mainly found in phylum Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. And here is our picture of pseudocoelom। pseudocoelom क्या होता है ना, आप देख लीजिए, ये हो गया जो ब्लू वाला टाइप हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया, और ये अंदर का क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया। यहाँ पर जो मेसोडर्म है, यहाँ पर जो मेसोडर्म है, क्या है ना, in some animals the body cavity is present but it is not completely lined by mesoderm, instead the mesoderm present in scattered pouches between the ectoderm and endoderm। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, जो
मेजोडर्म था कंप्लीटली लाइनिंग हुआ था, कंप्लीट लाइनिंग था। बट यहाँ पर जो मेजोडर्म है ये कंप्लीटली लाइनिंग नहीं कर रहा है सिलम को। आइदर इट इज प्रेजेंट इन पाउचेस, इट इज प्रेजेंट इन पाउचेस, सो इट इज नोन एज सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट है, बट इट इज सिलोम इज प्रेजेंट इन small patches like form, so they are known as pseudocoelom. Pseudocoelom means not the true coelom. And in acoelomate animals, look here, this is the ectoderm, this is mesoderm, and this is endoderm, and there is no gap, there is no gap here। देख लीजिए यहाँ पर क्या था, ये आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गॉट वॉल के बीच में गैप था, यहाँ पर भी गैप है, इट इज प्रेजेंट इन पैचेस बट गैप है, बट हियर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गैप। सो where coelom or body cavity or gap is absent in between the outer body wall and inner gut wall, that type of structure condition is known as acoelom condition, and that type of animals are known as acoelomate animals. But if question will arise, coelomate animals are diploblastic or triploblastic. Here you should remember, either the animal is acoelomate, either the animal is pseudocoelomate, or the animal is coelomate. All three types of animals are triploblastic in nature because they contain three embryonic layers, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm. Ectoderm, endoderm, and mesoderm. This is the all about our coelom. Next, we will study about the now we will study about segmentation. Now we will study about segmentation. Segmentation क्या है? Segmentation is defined as the division of a body into parts or segments. ये जो division, segmentation is defined as, what is segmentation? Segmentation is defined as segmentation of a body, segmentation of a body into parts is known as segmentation. In some animals, body is externally and internally divided into segments, and these body segments have serials of repetition. So this type of condition is known as segmentation, and we know that these segments structure are like equal and most similar to each other, and this is type of called is metameric segmentation. 1 minute, guys. Sorry for the interruption. तो ये जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन क्या है ना, body is divided into different segments. Like I will give the example of a annelids. Annelids जो आपका है यार्थोर्म, एक एग्जांपल है यार्थोर्म। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, मैं आप लोग फिर पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये जो annelid है, ये यहाँ पर क्या होता है ना, annelids में क्या होता है ना, आप लोग देखिए ये जो यार्थोर्म का बॉडी है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है। आप देखिए यहाँ पर सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, ये बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर
को मिलकर एक होल ऑर्गेनिज्म का क्रिएट फॉर्मेशन करते हैं। सो सेगमेंटेशन मीन्स द बॉडी इज डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है एंड द ऑर्गेनिज्म होल ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू मेनी parts but they function united but they are just divided into small ring like structures and this is known as segmentation mean like I show you a division of a body into parts or segments and the segmentation mainly found uh, in phylums like Annelida, annelids, then arthropods, and in chordates. And in chordates, segmentation mainly found in these three phylums like annelids, arthropods, and chordates. And you notice that when you will see an insect, their body, outer body part is also like ring-like structures are present. Their body is segmented into small parts. You can notice in grasshopper, in flies also. So segmentation mainly found in annelids, arthropods, and chordates. But here we have to remember that in annelids we can notice annelids में क्या होता है ना both external and internal segmentation present मीनिंग क्या होता है ना एनालिड का जो बॉडी है जब जैसे मैंने दिखाया आर्थोर्म को आप लोगों को इसका जो बॉडी है बाहर से भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और आप अगर उसको एनाटॉमिकली कट करेंगे उसका एनाटॉमिकल पिक्चर स्टडी करेंगे हम कट करके उसका बॉडी का अंदर का हिस्सा भी ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में सेगमेंटेड है so annelids are both externally and internally segments. Or in arthropoda, but in arthropoda, in phylum arthropoda, we can only notice external. We can only notice external segmentation. We can only notice external segmentation. But in chordates, we can only notice internal segmentation. Segmentation means if someone will arise, we are chordates in our body structure inside ring-like structure. Not only ring-like structure, our inside body is from inside it is divided into different compartments and you can see the picture of intestine also they are also segmented into we can see like our intestine is like small compartment like structure this is known as the segmentation okay so in annelids both external and internal segmentation arthropoda में external segmentation and chordates में क्या होता है ना internal segmentation दिखाई देता है उसके बाद the next feature is like our we'll study about the notochord. Now we will study about notochord. Notochord क्या है ना it is an elongated rod like flexible structure found during the embryonic development in some animals. It is क्या होता है ना एक rod like structure. It is a rod like structure. It is a rod like structure and flexible in nature and flexible
in nature, flexible in nature. ये rod like structure है and flexible in nature. Found in is it found in all animals? No, it is found in some animals, and those animals who have notochord, those animals who have notochord, we called them as chordates. Chordates. The main criteria for an animal to be classified under phylum Chordata, that they should have notochord. They should have notochord. And it is composed of cells which are mainly derived from mesoderm. Then it is an important question. Note it. Notochord notochord is mesodermal, mesodermal in in मेजोडर्मल इन ओरिजिन। जो मैंने बताया था आपको, जब मैंने जर्म लेयर के बारे में बताया था कि हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने जर्म लेयर होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं मेनली, कुछ कुछ एनिमल्स में 2 जर्म लेयर होता है। तो ये जितने सारे हमारे पास ऑर्गन है, जितने सारे ऑर्गन है, चाहे हमारा ब्रेन हो गया, हमारा आई हो गया, ईयर हो गया, हैंड्स, लेग्स, लाइक डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जितने भी ऑर्गन ले लो, ये सारे ऑर्गन्स क्या होता है ना, उन्हीं 3 लेयर से ही डेवलप होते हैं। आइदर सम ऑर्गन्स आर डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, कुछ ऑर्गन से एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, और कुछ ऑर्गन मेसोडर्म से डिराइव डेवलप होते हैं। जैसे कि सिलम, सिलम कहाँ से डेवलप हुआ था? मेसोडर्म से डेवलप हुआ था। ऐसे ही ये जो नोटोकॉर्ड है, इट इज ऑल्सो मेसोडर्मल इन origin. Notochord is formed on the dorsal and upper side of body of embryo and defines its primitive axis. ये जो नोटोकॉर्ड है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है एनिमल्स का। किस साइड में प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है एनिमल्स का। एंड इन मेनली इन कॉर्डेट्स, mainly in chordates we can notice notochord. But in humans, humans में क्या होता है ना, this notochord is in later stage is known as vertebral column. ये नोटोकॉर्ड कहाँ किस स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है? वर्टेब्रल कॉलम में। कहाँ पर? इन ह्यूमंस में। and it is mainly mesodermal in origin, and according to presence of or absence of, according to presence or absence of notochord, animals are mainly classified into 2 types. एक हो गया हमारा कोडेट्स, कोडेट्स में नोटोकॉड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड द अदर टाइप इज नॉन कोडेट्स। व्हाट? नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स में नोटोकॉड, नोटोकॉड क्या है? एब्सेंट है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड ऑल दोज एनिमल्स like phylum Annelida, all those phylums like phylum Annelida or annelids, arthropods, mollusca, these all phylums, other phylums from Porifera to Hemichordates, from Poriferans to Hemichordates, all these animals are belongs to non-chordates, are known as non-chordates because they don't have notochord. They don't have notochord, and notochord is, I already said, mesodermal in origin. This is important. This is a very important question. Notochord is derived or originated from which layer of which embryonic layer? The answer will be mesoderm. The answer will be mesoderm. Now we'll discuss about some other terms like
like stomachord. There is a term known as stomachord. Stomachord. Notochord is present in chordates. Notochord is present in chordates. But what is stomachord? Stomachord is also flexible, hollow structure. Hollow structure. It is found in hemichordates. हेमीकोडेट्स सो वी डिड नॉट हमको कंफ्यूज नहीं होने का कि स्टोमोकोड भी कोडेट्स में दिखाई देता है नहीं स्टोमोकोड कहां पर दिखाई देता है हेमीकोडेट्स में द फ्लेक्सिबल hollow structure tube like structure found in hemicodex is known as stomachord. Another term many students get confused that term is like nerve cord. I already said this notochord is present in chordates and it is derived from mesoderm. But the nerve cord originally or originated from the ectoderm. Nerve cord is derived from the ectoderm. Ectoderm means northward and northward. They are different developmental origin. The northward is mesodermal origin and northward is ectodermal origin. And northward should not confused with northward because northward is the part of a nervous system. Northward is the part of our nervous system. Notochord is the part of our nervous system. Notochord found only in chordates. It is found, I already said, notochord is found only in chordates. What nerve cord is found in? What nerve cord is found in chordates? Nerve cord is found in chordates and in non-chordates also. Notochord only found in chordates, but nerve cord is found in chordates and non-chordates also. And the position, the notochord मैंने आपको लोगों को बताया कि notochord is dorsal in position. But the nerve cord is ventral in position. In कहाँ पर ventral in position? Nerve cord is ventral in position in non-chordates. But it is dorsal in position. In chordates. This is all about the basic features. Of division of animal kingdom. And from next class, we will study about the protozoa. Then we will study about the life cycle of Plasmodium vivax. Then we will study about the different phylums like phylum Porifera, phylum Ctenophora, phylum Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes. We will study in details about all these things. थैंक यू आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मैं उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा थैंक यू